Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 53 for this topic body fluids and circulation. Okay. Now, in this particular topic, we have been learning regarding the composition of the blood. We have seen that blood has got two main components, plasma and the formed elements. That formed elements are also called as blood corpuscles. We have seen that plasma is the fluid matrix and that is forming near about 55% part by weight of the blood, and the remaining 45% part is formed by the, what do you say, that blood corpuscles. That means if you take 100 ml of the blood and then if you coagulate that blood, particularly centrifuge, then whatever the cellular mass is there, that will settle down and the plasma will be remaining up, and that plasma, if taken aside and weighed, then you will find that it is near about 55% and 45% is that blood corpuscles. Okay. Now plasma, regarding plasma we have mentioned everything, but do remember that if you have to learn all points very properly, have a practice of writing all in such kind of the points there, so that at the time of revision also that will help you. Suppose you have learned the part very nicely, अब just रिवाइज करना है तो लिखते जाओ पॉइंट्स कितने याद आते हैं in this manner and you will be confident of that later on. Okay. तो पहली बात यह है that plasma is 55%, formed elements are 45%. Formed elements को blood corpuscles भी कहा जाता है. Okay. And they are of three kinds. We shall learn later on. Erythrocytes, leukocytes, and the third is blood platelets. Now plasma is a fluid matrix. It is having 90 to 92% of the water and 6 to 8% of the plasma protein and the remaining materials in the small amounts. तो ये वाटर वहां पे 90 to 92% है. अब किसी स्टूडेंट्स के ध्यान में आ जाता है, वो पूछता है मुझे मैथमेटिक्स में अगर वीक है तो, हम बायोलॉजी के लोग मैथमेटिक्स में वीक ही रहते हैं, वो that he used to ask me, sir, how it is possible that plasma is only 55% in the blood and how it can have 90 to 92% water. 55% है वो प्लाज्मा, तो 90 to 90% वाटर हो कैसे सकता है उसमें? हाँ, that is a question to be thought. Okay. पर ये ध्यान में ले लो, ये ब्लड के बारे में हम कह रहे हैं. ब्लड में 55% प्लाज्मा है. अब प्लाज्मा को निकाल लिया एंड सपोज यू विल टेक 100 ml और 100 ग्राम ऑफ द प्लाज्मा, तो उसमें 90 to 92% क्या है? वाटर है. ओके. एंड द रिमेनिंग 6 to 8% नियर अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन्स. सो फ्लूइडिटी इज देयर. तो ये बात अगर अच्छी तरह से हमारे दिमाग में बैठी है तो कभी कभी हमको कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू आ जाता है. दैट परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, तो वो 90 to 92% दिया होगा, तो जस्ट कैलकुलेट करो. ओके. 90 to 92% ये प्लाज्मा में है. डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पे जो है वो 55% जो प्लाज्मा है उसमें कितना आने वाला है वो ब्लड में आ जाएगा. कैलकुलेट करके बताओ मुझे. ओके. देन that, or otherwise you will find that MCQ very soon when that will be given in my XIth Biology Shorts channel. Okay. अब देखो, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है PP जिसको कहते हैं, they are very important and they are of three kinds. One is fibrinogen, other is globulin, third is albumin, and their functions are to be remembered. उनके functions भी हमें अच्छी तरह से याद रखना है. ओके. क्या फंक्शन है देखो. फाइब्रिनोजीन जो है दैट इज हेल्पिंग इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इसके सिवा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो जाएगा. लेटर ऑन वी शैल लर्न व्हाट इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. whenever the injury is there, whenever that wounds are there to the body, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ इंजुरी हो जाती है,
जख्म हो जाती है, दिल को नहीं शरीर को, तो उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, because of that blood capillaries or the blood vessels are cut there. Okay, so that bleeding gets stopped normally. उस जख्म का जो उस वुंड का जितना भी साइज है उसके अनुसार, अगर छोटी सी जख्म है जैसे शेविंग करते हुए होती है, then at that time that if that particular boil is there and that is broken, then और थोड़ा पार्ट कट हो गया, then that bleeding may get stopped very soon. पर अगर बड़ी जख्म है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा. Okay, so that blood gets coagulated in the form of a solid mass at the wound place, and that is called as the coagulation of the blood, clotting of the blood. Due to that, the flow of blood outside will be stopped. तो इस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की प्रक्रिया एक कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन है, वो वहां पर ही होती है. ओके, सो ऑल दैट फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन द ब्लड, प्लाज्मा में होते हैं, एंड फाइब्रिनोजेन आल्सो देयर. अगर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जिनके सहायता से हो जाता है, जिनकी हेल्प से हो जाता है, इफ दैट factors are present in plasma, then a question is there, why not that blood is all time get coagulated even in the blood vessel? तो उसका रीजन ये है that they are present in the inactive form. Factors for clotting of blood are present in inactive form in the plasma, and whenever the wound is there, then only they get activated. तो वो process है. Then another thing is there, globulin is another protein. It is involved in the defense mechanism. Defense mechanism में उसका रोल है, यानी particularly जो एंटीबॉडी हम कहते हैं, they are named as the globulins, immunoglobulins. Okay, so globulin is involved in the, what you say, that particularly defense of the body. Germs आते हैं, toxic materials आते हैं, तो उसके साथ फाइट करने के लिए लगता है. एंड फाइब्रिनोजेन इज रिक्वायर्ड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ग्लोबुलिन फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, अल्ब्यूमिन इज मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड. ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है. ओके, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है. ओके, यानी जब पर्टिकुलरली बात आती है किडनी में ब्लड फ्लो होने की वगैरह, सो एट दैट टाइम दैट ऑस्मोटिक बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उस सॉल्यूशन से दैट पर्टिकुलरली मटेरियल्स आर पास टूवर्ड्स द अदर सॉल्यूशन. ओके, ये हमें मालूम है. देन ऑस्मोटिक बैलेंस के बाद ये तीनों के भी फंक्शंस याद रखो, because they can be asked in the form of MCQs. Okay, that's why I have written that. And these are that 3 plasma protein. एक तो names पूछे जाते हैं, find the odd one out कहा जाता है, फाइब्रिनोजेन, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, और चौथा कोई भी नाम दिया हीमोग्लोबिन. Then we can say that all are proteins, but the upper 3 are present in the plasma and hemoglobin in the RBC. तो यहां पे आंसर हमारा क्या आना चाहिए? नो डाउट दैट हीमोग्लोबिन इज ऑड. ये फंक्शन के साथ भी हो सकता है, फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं. बाकी के मटेरियल्स, इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उसके बारे में अब हमको मालूम होना चाहिए. डाइजेस्टेड फूड मटेरियल में भी देयर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, देन दैट लिपिड्स particularly they are present in the plasma. Then the materials like waste products, nitrogenous, urea, uric acid, creatinine are also present in the blood plasma. Okay, vitamins are also present in the blood plasma. Also the mineral ions like Na plus, K plus, then that Ca2 plus, Mg2 plus, HCO3 minus, they are a Cl minus, they are also present in the plasma. तो वो भी ध्यान में रखो. And antibodies and antitoxin, they are also present in the plasma. So yesterday I told you that this plasma of the blood is just as
like the yesterday means in the earlier video. In the earlier video, I told you that this plasma is nothing but as like the Indian rail carrying lot of substances with it. वो बिल्कुल सही है. तो ये पूरे अच्छी तरह से ध्यान में रखो. Very very important part. Then one sentence is there very important, that plasma without clotting factors is called as serum. Plasma without clotting factors is called as, करेक्ट आंसर होना चाहिए सेरम. ये बिल्कुल NCERT लाइन है. और मैं हरदम कहता हूं MCQs जो आते हैं नीट में, maximum times you will find that they are line to line MCQs from the NCERT book. So don't ignore that. Okay? तो प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, आगे किसी ने पूछा तो. Then functions of plasma, you should know that the mobility of the blood, fluidity of the blood is only and only due to plasma. Just imagine that plasma is removed from that all blood there, then blood will not be able to flow. How the cells will flow there? Cellular mass is just get coagulated there, and the flow of these materials will be possible. Flow of the blood is possible only and only due to this plasma. Fluidity is there. And another important thing is that the actual transport, हम कहते हैं blood carries out the transport of the materials, but the actual transport of variety of the materials that I have mentioned there is done by whom? That is done by the, what you say, that plasma. Okay, it is the transporting medium. So I hope you are getting it. So do like and share this video to the friend circle, and do subscribe to my channel XIth Biology and XIth Biology Shorts. We shall meet in the next video to learn the formed elements like erythrocytes, then that leukocytes and blood platelets. Okay, thanks a lot.